Hello everyone, good morning. Today we are back with the most important questions of class 10 according to your uh, board syllabus. So here we are going to start our live session. Students, just listen to us carefully. So come to the section A. Here you can see it is totally depend on reading part. So इसमें include होते हैं two passages. As you can see, they both are unseen passages. So first question you can see here. Read the following passage and answer the questions given below. The Green Revolution was a period of agricultural transformation in India that began in 1960s. It introduced high-yielding varieties of seeds, modern irrigation techniques, and chemical fertilizers to increase food production. Dr. M.S. Swaminathan, known as the father of India's Green Revolution, played a crucial role in this transformation. The movement primarily focused on wheat and rice cultivation in states like Punjab, Haryana, and western Uttar Pradesh. As a result, India became self-sufficient in food grain production by the 1970s, ending its dependence on food imports. Wheat production increased from 11 million tons in 1960 to 73 million tons by 2006. However, the Green Revolution had some negative effects, including depletion of groundwater, soil degradation, and decreased regional inequalities. Small and marginal farmers in rain-fed areas did not benefit equally. Despite its limitations, the Green Revolution saved millions from starvation and remains a significant milestone in India's agricultural history. So, come to the question. Question 1 is basically of MCQ based. So, here 8 questions are given in MCQ form and you have to give the answer of the question. Second question is basically depend on subjective pattern. So who is known as the father of India's Green Revolution, as we have discussed, Mr. Dr. M.S. Swaminathan. The next is, which crops were primarily focused on during the Green Revolution? Obviously, what we have read in this passage about wheat and rice. When did India become self-sufficient in food grain production? In 1970s. Already year is mentioned in the passage. No need to be get confused. What was one of the negative effects of the Green Revolution? Definitely depletion of groundwater. Which states were the main beneficiaries of Green Revolution? Obviously Punjab and Haryana. By 2006, what was India's wheat production? 73 million tons. In the end of the passage, already year and how much wheat production is given to you. Find a word from the passage that means the same as conversion or change. इसका दोनों का similar meaning निकालना है. Transformation. Find a word from the passage that means the opposite of dependence. वहाँ similar word था, that is synonym. यहाँ पर आपको पूछा है dependence का opposite, self-sufficient. Okay. So second question is depend on your subjective pattern. As you can see, as you can read also. Just take a screenshot by reading this. How does tourism benefit local communities? Tourism generate employment for guides, hotel workers, artisans, and transporters in local communities. Name two Indian states that have prospered through tourism: Rajasthan and Kerala. Already mentioned, these are already mentioned in the passage. What environmental problem is faced by popular tourist places like the Taj Mahal? Popular tourist places face environment degradation due to overcrowding and pollution. Definitely degradation हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रहा है और because of tourism उनकी वजह से ज़्यादा हो रहा है तो it creates environmental problem.
How can commercialization of culture affect traditional practices? Commercialization leads to loss of authentic traditions as cultural performances become mere entertainment for tourists rather than genuine cultural expressions. What economic problem do local residents face in tourist areas? Local residents experience rising cost of living as prices inflate in tourist places. वहाँ पे inflation बहुत ज़्यादा हो जाता है, मतलब prices बहुत ज़्यादा rise हो जाती है, increase हो जाती है. What is sustainable tourism according to the passage? Sustainable tourism balances economic benefits with cultural and environmental preservation through measures like limiting visitors, promoting responsible behavior, ensuring fair community benefits, and investing in conservation. The next is the most important question. The last के two questions होते हैं. These are basically जो depend होते हैं हमारे पूरी vocab already passage में से ही लेना है. We know the damage and decline means, but according to passage, the word is given ना, only you can use that word. तो damage और decline का वहीं पर similar word अगर हमें देखना है तो degradation already mentioned in the passage. Write the opposite word of the following from the passage, that is destruction, that is preservation. Okay. Then opposite word जैसे destruction है तो you have to build, make, ये सब भी हो सकते हैं, but preservation यहाँ पर already passage में mention है, that's why we are using the preservation. Come to the next, that is section B, writing part. It is totally basically depend on writing skills part. So only 3 questions we have to cover in this 3, 4 and 5. 3 questions is optional question, that is email writing and letter writing. तो first आपका A part email letter writing आएगा और second आपका email writing आएगा. Letter writing में formal और informal दोनों हो सकते हैं, which we have already done in our previous class. And fourth question is of story writing. Definitely 2 stories examiner will give you. You have to choose one and you have to do it. Okay. Fifth question is basically of paragraph writing. One is visual aid and one already topic is given to you. Come to this question 3. Imagine that you are Kavita Kunal reading at Government Senior Secondary School Rampur. Write a letter to your friend Rekha or Tanmay telling her or him about the importance of yoga for health. So topic आपको given है about the importance of yoga for the health, and you have to mention the reading in which school you are reading. Already आपको center address mention है, you are belonging from Rampur. So here is the format of your letter writing. स्कूल जो भी आपका मेंशन है, आपको सेंटर एड्रेस वहां पर आप रहते हैं तो यू हैव टू मेंशन दैट सेंटर एड्रेस ओनली. रामपुर से आप बिलोंग करते हैं, देन डेट आ जाती है. आफ्टर दिस टू होम यू आर सेंडिंग, रेखा और तन्मय. डेफिनेटली थैंक्स फॉर योर लेटर. यू वांटेड टू नो अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ योगा फॉर हेल्थ. दिस शोज दैट यू आर वेरी अवेयर ऑफ योर हेल्थ. ओके. फर्स्ट थिंग आई वांट टू टेल यू, जो मैंने आपको एग्जाम में दिया था आपको एज अ सैंपल या एज अ जस्ट एग्जाम्पल, तो आप लोगों ने पूरा इंपॉर्टेंस ऑफ योगा का पैराग्राफ लिख दिया. नो नीड टू राइट दैट. आपको सिर्फ इंपॉर्टेंस बतानी है, योगा करने से क्या होता है वो नहीं बताना. आप उसको लेटर लिख रहे हो और उसको बता रहे हो कि तुमने जो मुझे एडवाइस दी मुझे अवेयर रहने की, वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रही. डू नॉट फॉरगेट दैट वी आर राइटिंग अ लेटर ओनली. Yoga maintains health and fight disease. It keeps us physically and mentally fit. The UNO has declared 21 June as International Yoga Day. ये किसी भी बच्चे ने नहीं लिखा था. Regular yogic practice keeps us healthy, but that is okay with it. आप इसमें 2 लाइन्स भी लिखेंगे, that is okay. हमें सिर्फ उसको थैंक यू कहना है कि you are awareing us. That's it. Rest is okay, मतलब बाकी कुछ बचा हुआ हमारा ओके है. आप यहाँ पे कोई ब्लास्टिंग या कुछ दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे योगा के लिए था इसलिए एक नया पॉइंट आपको मिला है. वो शी वांट्स और ही वांट्स टू अवेयर यू रिगार्डिंग योगा एंड यू हैव टू थैंकफुल ऑफ इट. तो आपने यहाँ पर रेस्टेस ओके कर दिया कि हाँ हम फिट एंड फाइन होते हैं और हमें ये चीज पता चल गई. नाउ वी आर अवेयरिंग इट. तो अब ओके है सब चीज. ओके. या यू हैव टू राइट इट. योर लविंग फ्रेंड कविता और कुणाल. राइट वॉट एवर यू वॉन्ट. Come to the, and this is of a formal or informal. This is informal letter. Okay.
नेक्स्ट इज ऑप्शन में एज आई हैव टोल्ड यू लेटर और ईमेल राइटिंग आएगा. ऑप्शन में आता है यू हैव फॉर्म्ड एन ऑनलाइन ग्रुप ऑफ योर फ्रेंड्स, यू वर sick फॉर सम डेज, you have come to know of second test, write an email to one of your friends requesting him or her to share the syllabus of for all subjects of your class. The mail ID is this. वैसे 90% मेल आईडी आपको गिवन होती है. इन केस अगर नहीं गिवन होती है तो जिस भी इंसान का नाम इसमें मेंशन है उस पर्सन को आप यूज करके मेल बना सकते हैं. ठीक है, बट रिमाइंडेड कि अगर फर्स्ट लेटर स्मॉल है वैसे मेल एड्रेस जो है इट शुड बी इन स्मॉल लेटर. यू हैव टू यूज अ स्मॉल लेटर. इसके भी मार्क्स कट हो सकते हैं. I have taken a picture of this so that you can be easily able to read it. 2. First you have to make a bracket or box. Then write to whom you are giving this. wisescholar@gmail.com. CC and BCC. What is the use of CC and BCC? The use of CC and BCC is this. If you are sending this mail, to more than one person, then you have to use CC also, that is carbon copy. ठीक है, ये आप जिसको सेंड कर रहे हो उसके बाद यहाँ पर दूसरे वाले की मेल अगर आप डाल देंगे, मेल एड्रेस आप लिख देंगे तो इट मीन्स वो दोनों पर्सन को चली गई है. ओके, और इफ यू वांट टू सेंड दीज more than 2, then you have to use BCC, ब्रॉडकास्टिंग कार्बन कॉपी. तो इसका मतलब ये है हम मोर देन 2 को भेज रहे हैं, मतलब पूरी एक सोसाइटी कमिटी कहीं अगर अपन मेल भेजते हैं ब्रॉडकास्ट करते हैं उसको तो वो यहाँ पर यूज करते हैं. आप मेल एड्रेस डालते जाइए, कॉमा लगाते जाइए, देन मेल एड्रेस डालते जाइए. ओके, बट मेल एड्रेस शुड बी इन ओनली स्मॉल लेटर. डू नॉट यूज कैपिटल लेटर इन दैट. सब्जेक्ट, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, मोर देन 2 होते ही आप बीसीसी में ट्रांसफर करेंगे. यहाँ पर आपने लिख दिया एक मेल किसको जा रही है. ओके, सेकेंड यू हैव टू लीव इफ यू आर यूजिंग बीसीसी, मतलब इफ यू आर सेंडिंग मोर देन 2 देन जस्ट लीव द स्पेस सीसी एंड यूज बीसीसी. कॉमा लगाते जाए और एड्रेस लिखते जाए. ओके, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपका है आस्किंग फॉर अ कॉपी ऑफ द सिलेबस फॉर ऑल सब्जेक्ट्स. माय डियर फ्रेंड, और रेस्ट ऑफ द जो आपका फॉर्मेट है टोटली जो लेटर राइटिंग वाला फॉर्मेट होता है बस उसी की तरह यूज करना है. सैल्यूटेशन लिख के बॉडी ऑफ द लेटर लिख के आप उसको वाइंड अप कर देंगे. माय डियर फ्रेंड्स, होप यू आर मेकिंग ग्रेट एफर्ट्स टू पास द एग्जामिनेशन विद अ wonderful score. Presently I find myself in great difficulty as I was sick for some days and now I have come to know of second test. I will be grateful to you if you care to send me a copy of the syllabus for all the subjects of your class on my following email address. And your friend has also given your email address. You have to send it. Thanks, yours sincerely, Pramodin, whatever you want. Got it? समझ आया? ओके, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो रिपीटेड हैं या आने के चांसेस हैं, तो उसमें से एक वन ऑफ ये भी है. हाँ, of course, but if you are preparing for email writing, so you have to see these kind of questions. Come to the next question, that is also of letter writing. I have taken here letter writing, rather formal or informal, but the most repeated, most important, totally इनके बाहर से कुछ नहीं आएगा. If you have already watched this live session ना, तो उसके बाद से आपको 3, 4, 5 में कुछ भी नहीं मिलेगा. वो सारे क्वेश्चन इन्हीं से रिलेट करते हुए आएंगे, तो आप लोग इनके टॉपिक जरूर याद रखें. Imagine that you are Ankit living at Subhash Nagar, Ajmer. You want a camera during your summer vacation. Write a letter to your friend requesting him to lend you his camera. We, as usual, first 2 lines is basically sender address, date, my dear, जो भी इसमें mention नहीं है, but you are Ankit इसमें mention है, उसका address इसमें mention है. ठीक है? My examinations are over. I have done well there, and the summer vacations in our school will begin from 16th May. I have planned to visit Mount Abu during this vacation. I want to have some pictures to keep the memories of my visit to that place for future. So I need a camera during these vacations. My elder brother and I know how to operate it. We will take utter care of it. I shall return it to you as soon as I come back from there. I hope you will not refuse me for it. Please convey my best regards to your parents.
ओके ये रिगार्ड्स दे रही हूँ, ब्लेसिंग्स और रिगार्ड्स जो मैं कहती हूँ उसने मेंशन कर दिया है ऑलरेडी. योर्स सिंसियरली योर्स लविंग फ्रेंड अंकित. गॉट इट. Do not forget the format also. Now you are Sunil, you have passed class 10th in any kind of year. You have applied to Board of Secondary Education Rajasthan Ajmer for the re-evaluation of your marks in English subject on 10th July. The year is. Send an email to the Secretary Board of Secondary Education Rajasthan on the given email address or email address already given है for inquiring about the status of your marks. ये क्वेश्चन भी आप याद रखें. As usual, you have to make a box. You have to write to CC, BCC, subject, and the email address which already questionnaire given you. Subject for inquiring about the status of my marks. Sir, I am Sunil. I have this. तो ये आपको already mention करना है. And please tell me the status of my marks at this. If you want to reply back now, then you have to mention the email address of yours. ठीक है, so that it will be easy for him or her. Then thanking you, yours faithfully. Okay, yours obediently, yours sincerely, yours faithfully. You can use it. Okay, in email address. Come to the next. Imagine that you are Nikhilesh, living in government hostel Jaipur. Write a letter to your father requesting him for the permission to go on a historical tour. आपको इस बात के लिए परमिशन चाहिए कि आपको हिस्टोरिकल टूर पे जाना है. ये भी एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट लेटर में से है. वही फर्स्ट 2 लाइन्स यूज फॉर सेंडर एड्रेस, देन डेट, देन माय डियर फादर सैल्यूटेशन. आई एम हैप्पी हियर, आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ हिस्टोरिकल और एजुकेशनल टूर. क्योंकि फादर को तो हम एजुकेशनल पूरा बताएंगे कि वो टोटली बेसिकली डिपेंड है एजुकेशन से. About 30 students and 2 teachers will go on tour during the winter vacation. It is a 10 days tour. We shall leave Jaipur on 21st December. We shall visit Udaipur, Mount Abu. ये आप जगह के नाम बता देंगे. All my friends are going for this tour. It will give us good historical knowledge about these places. So please allow me to go on this tour. I need 1000 rupees to join this tour. I expect that you will send me the needful amount along with your permission letter to join the tour. Please convey my regards to mother and love to Kamla. Kamla जो है उसकी सिस्टर होगी डेफिनेटली. तो हम लव छोटों को प्यार लिखते भी हैं हम हिंदी के लेटर में, और मदर जो है मदर को हम रिगार्ड्स दे रहे हैं. ओके, वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू इन दिस. यहाँ पर आया है 10 डेज टूर और डेज के बाद में पोस्ट्रोफी लगाया. आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन. ये ऐसे क्यों लगा? Yeah, I want to ask. This is my question. Anyone answer? No one. It shows belonging. First of all, apostrophe shows belonging. ठीक है, possessive. I always tell you कि यहाँ पर जब ऐसा कोई वर्ड है जहाँ पर आप प्लूरल कर रहे हो उसका या एस ऑलरेडी उस वर्ड में यूज होता है, तो आपका अगर उसमें अपोस्ट्रोफी यूज करना है, जैसे वो 10 दिनों का टूर है, ताकि की यूज करता है वो. ठीक है, बिलोंगिंग शो कर रहा है ना. एस के बाद में अगर हमें यूज करना है तो उसके बाद में आएगा. इन दैट केस कि अगर वो वर्ड में एस इंक्लूड होता है तो. गॉट इट. जैसे कि पेरेंट्स होम, आई लिव इन माई पेरेंट्स होम, तो यहाँ पर ऐसे आएगा. ठीक है, पेरेंट्स उसमें आपका रिलेशन शो हो गया, बिलोंगिंग शो हो रही है किसके घर में? पेरेंट्स के घर में. 10 दिनों का टूर है. मैंने बोला का के की यूज होंगे हिंदी के. ऑलवेज डू नॉट यूज ऑफ और टू. यहाँ पे जब बिलोंगिंग शो कर रहे हैं तो आप इसमें अपोस्ट्रोफी एस यूज करेंगे, एस और अपोस्ट्रोफी भी यूज करेंगे इस तरीके से. अगर यहाँ पर कोई ऐसा वर्ड होता है जैसे कि चाइल्ड है, जस्ट सपोज चाइल्ड एक वर्ड है, उसमें मेरे को लग रहा है कि चाइल्ड का बैग है, तो चाइल्ड बैग, तो मैं इसको ऐसे कर दूं. मे आई यूज लाइक दिस? व्हाई? बिकॉज चाइल्ड में ऐसा आता ही नहीं है. मैंने बोला उन वर्ड्स में ऐसा कर सकते हो जिसमें एस इंक्लूड हो जाता है, बट चाइल्ड में एस इंक्लूड नहीं होता है. तो हम चाइल्ड में
चाइल्ड बैग, ऐसे करें तो ये बिलोंगिंग शो कर रहा है। और वहां पे पेरेंट्स ऑलरेडी था, आप कहीं भी देखते हैं तो ऐसा बहुत रेयर केस में देखते हैं या नहीं देखते, रेयर टू रेयर होता है। आप ज्यादातर पेरेंट्स हमारे दोनों इंक्लूड होते हैं बिकॉज, नहीं कभी भी पेरेंट टीचर मीटिंग नहीं होती, पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, क्योंकि आपके घर से मोर देन वन आए, स्टूडेंट ही मान लो, तो है तो रिलेट कर रहे हैं ना वो। गॉट इट? इस तरीके से होता है, तो आप अपोज एस के बाद अपोस्ट्रोफी लगाते हैं उसको। गॉट इट माय पॉइंट? नाउ इज देयर एनी इशू? योर्स लविंग सन निखिल, please do not forget to mention that name only which examiner will give you in question. No need to use your name in that. Okay? Come to the next. That is again email writing. You are Bharti of class 10. You are ill. You cannot attend the school. Write an email to your class teacher to grant you leave for 2 days. ये आपके at least 2 times repeat हुआ है. Format यही था. Even topic यही था कि you are ill and you are not able to attend the school. You want your syllabus or you want your timetable. बस इतना सा चेंज होता है, बट टॉपिक यही रहता है और ईमेल एड्रेस ऑलरेडी मेंशन है। तो जो भी मेल आईडी है, 2 days leave owing to illness, sir, with due respect I state that I am down with fever and flu. आप कुछ भी दे सकते हैं। Where is owing to illness, मतलब मेरे को मेरे लिए ही 2 दिन की छुट्टी जो है मैं खुद से ले रही, खुद से ले रहा हूँ, जो ओन खुद के लिए ही चाहिए। I say that I am down with fever and flu, because of which I will not be able to come to school for at least 2 days. I need leave from 10th up to 11th. Kindly grant me the same and oblige. Thanking you, yours obediently, Bharti Constant. ये फॉर्मेट आपका रहने वाला है, and you have to follow this format. ठीक है? Is there any problem? क्योंकि ये ध्यान से देख लेना, you have to focus on it because it is very very essential, very important. Come to the next. Again, letter writing. You are Vishaka, living in Bharatpur. You have won the first prize in the debate held in your school recently. Write a letter to your mother telling her about it. This is informal letter because you are writing. मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पर formal letter कम और informal letter ज़्यादा repeat हुए हैं, and you have to focus on that format only. Please do not forget it. First 2 lines basically depend on sender address, then date, dear mummy या dear mother. Obviously हम किसी को लिख रहे हैं तो mother में लिखेंगे, मम्मा और मम्मी कुछ ऐसा लिखेंगे. You will be glad to know that I have won the first prize in debate held in our school on the 10th of January. आप date change कर दीजिएगा. 21 schools of Bharatpur district participated in it. The topic of the debate was, in the opinion of the house, girls and boys should have equal rights. I spoke in favor of the motion. I got a bicycle as the first prize. With kind regards, your loving daughter Vishaka. Okay. यहाँ पर दे रखा है गौरव, girls and boys. May I write like this or like this? Second one. Why? फर्स्ट वाला इसलिए आएगा बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट होल गर्ल्स एंड होल बॉयज हियर, कंप्लीट गर्ल्स एंड कंप्लीट बॉयज फुली। ओके, और यहाँ पर ये बॉय के बाद अपोस्ट्रोफी लिखने का मतलब ये है उस लड़के का। गॉट इट? जब मैं बोलूं, जैसे मैंने बोला था चाइल्ड्स बैग, तो मतलब उस बच्चे का ही बैग है, तो दिस इज दैट बॉयज बैग, तो वहां पर आएगा दिस वन, बॉय का बैग। ठीक है, अगर मैं बात कर रही हूँ बॉयज एजुकेशन या गर्ल्स एजुकेशन, तो वहां पे पूरी होल कम्युनिटी, होल पीपल की बात कर रही हूँ, दैट्स व्हाई। फिर वहां पर आता है गर्ल्स एजुकेशन या बॉयज अवेयरनेस या एजुकेशन। गॉट इट माय पॉइंट? ओके, हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। Come to the next. As well as email writing, you are Saraswati Devi.
Write a formal email to the principal of your school at principalgss.com requesting to arrange an online counseling on how to face board exams. Got it my point? आ तो related to school रहा है. First thing, आपको वहाँ पे mention है already mail ID. You have to use that mail ID. जो बच्चे डरते हैं कि we do not want to face email writing तो हम करेंगे ही नहीं. Why? Just do it ना. Good. ठीक है. Come to this. 2 already mention है यहाँ पर mail address. Then CC, BCC. Subject for arranging online counseling on how to face board examination. Okay. I just want to tell you कि यहाँ पर सब्जेक्ट अगर हम लिख रहे हैं तो बात सिर्फ सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज ही, ठीक है. वहां पर ये भी आ जाता है राइट एंड मेल एड्रेस, वो नहीं है, ठीक है. सिर्फ सब्जेक्ट का मतलब जो बेसिक पॉइंट है ना उसी पे दिमाग है, उसी पे जोर डालना. मैडम, board examinations for secondary classes are at hand. Students are in examination blues. Please arrange an online counseling session on how to face board examinations. It will help us in reposing confidence. Thanking you, yours obediently, Saraswati Devi. Rohan, come and sit here. Got it? Saraswati Devi already mentioned it. You have to be like this. Do not forget the format especially. उसी के मार्क्स से. Come to the next. Again, letter writing. Imagine you are Kailash living in Jaipur. Your younger brother Mohan living at Shahpura is very good at studies, but he is physically weak. Write a letter advising him to improve his health by taking part in games and sports. First 2 lines already basically totally depend on sender address. Please do not forget. Then date. My dear Mohan, I received your letter last evening. We felt proud. अब देखो last evening मतलब previous day की बात हो रही है. You have to write totally on past tense. Do not forget. ठीक है? I received your letter last evening. We felt proud to know that you have passed the secondary examination in the first division. But I am much worried about your weak physique. ठीक है? Physical health. Remember, a healthy mind lives in a healthy body. Good health is very important in life. Next is, you should take care of your health. You should take light exercise in the morning. You should take milk and fruits regularly. कुछ एडवाइस हम हमारी मर्जी से डाल सकते हैं बिकॉज वी आर राइटिंग इनफॉर्मल लेटर. इनफॉर्मल लेटर से उस लेटर्स में आप यूज कर सकते हैं कुछ अपना भी, ठीक है. तो यू कैन यूज मोर देन वन पैराग्राफ. You should also play games in the evening. All these things will help you to improve your health. With love, yours loving. अगर आपको ये नहीं समझ आता कि किसी को रिगार्ड्स देने हैं, ब्लासिंग देने हैं, what you will write, तो आप सिंपल सा with love भी लिख सकते हैं, ठीक है. और स्पेशली फादर मदर की बात हो तो you can use. Got it? Come to the next. Again, email writing. You are Sachin, the captain of football team of your school. Your team wants to play a friendly football match with government secondary school Sarola. Compose an email to be sent to your principal for getting the permission of for the same. Next is this. Already I mentioned subject will request for permission to play friendly football match. I'm not going to repeat again and again the format. You can see. Respected sir, I am Sachin, the captain of school football team. I would like to seek your permission to organize a friendly football match between our school and government secondary school, Sarola. The match would be a great opportunity for our team to improve and showcase our skills. We assure you that all necessary arrangements will be made and the event will be conducted responsibly. Looking forward to your approval. Thank you, Sachin, captain. Whatever you want to mention, your designation you have to mention. Especially अगर इन क्वेश्चन में ऑलरेडी क्वेश्चन आर पूछ रहा है, then you have to mention. Got it? How to do? You all know very well. Got it, everyone? Okay. So just take a look. और अगर मैं किसी को अंडरलाइन करती हूँ तो आप समझ जाइएगा कि कोई इंपॉर्टेंट लाइन है. You have to catch the words. Here you are not mad and I am also not mad कि मैं again and again इस चीज को repeat कर रही हूँ. Why I am repeating? कि अगर आप उसमें ये मेंशन करते हो कि मेरे को तो ये आई बैक टू स्टेट दैट आई वांट टू से दैट यूज समथिंग
तो वो आपको हर लेटर में स्टार्टिंग की जो लाइन है ना इन्फॉर्म करने के लिए वो आपको अलग मिलेगी एंड यू हैव टू यूज दीज लाइन सो दैट एग्जामिनर पे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है एंड यू विल गेट द गुड मार्क्स गॉट इट माय पॉइंट कम टू द नेक्स्ट okay come to the next fifth question which is basically depend on story writing. Write a short story with the help of given outline in about 100 words. Also mention the title and the moral of the story. Okay, a woodcutter, as we have already discussed in the previous live session also, see how you will get to know that which kind of story is it. How you will know? A woodcutter goes to forest, cries, God appears, bring axe of gold. तो इससे आप समझ गए कि honest woodcutter वाली story है. And we all know about it. ठीक है? But you have to write whole and soul the story in totally past tense form. And how you will write? Just see it. And ये stories जो है as usual जैसे मैंने letter और email लिए most repeated वाले और जैसे questions बनते जाते हैं जो changes होते हैं we have already discussed it. उसी तरीके से ये stories भी हैं जो most repeated stories हैं. In your board from your board examination, just focus on it. A woodcutter went to the forest to cut wood daily. He began to cut a branch of a tree. Suddenly, his axe slipped away and fell into a river. He cried for help. The water god means, appeared and brought an axe of gold. The woodcutter said, "It is not my axe, so I will not take it." The god jumped back into the water. This time he brought an axe of silver. The woodcutter again refused to take it. The god again jumped into the water. He brought the woodcutter's iron axe. He got it happily. The god was pleased with the honesty of the poor woodcutter. He gave all the three axes of the woodcutter. The woodcutter was very happy and thanked the god. The moral of this story is honesty is the best policy. वो स्टोरीज को मॉडिफाई करा गया है लेकिन एक्चुअल स्टोरी रियल स्टोरी यही है बाकी मॉडिफिकेशन आते रहते हैं स्टोरी में come to the next a farmer wonderful hen a golden egg daily a greedy man thinks to get all his eggs ये पता चल रहा है कि वो hen फार्मर वाली है जो गोल्डन एग्स hen वाली है जो गोल्डन एग्स देती है फार्मर को मिलता है hen that laid golden eggs थोड़ा बहुत आइडिया उस आउटलाइन से नहीं कंप्लीट आइडिया आपको मिल जाता है और आपको स्टोरी अच्छे से लिखनी है सो दैट यू विल गेट फुल मार्क्स 4 की होती है 4 की 4 ही हमें चाहिए There was a farmer, he had a wonderful hen. It laid a golden egg daily. The farmer became rich. He was happy. He was a greedy man. One day he thought to get all the eggs at a time. He brought a sharp knife. He caught the hen and cut it open. But when he opened the hen, there was nothing but only blood. There were no eggs at all. The farmer felt really sad because now he had lost the hen and would not get any more eggs. मतलब moral of the story is greed is a curse. अब शाप हो जाता है लालच बन ही गया उसके ठीक है डेली उसको कुछ कुछ मिल रहा था but he was not satisfied with that. दूसरा moral इसका ये मिलता है कि हमें greedy नहीं होना चाहिए. Do not be greedy. Of course, a good boy falls in bad company. मैंने भी बहुत बार रिपीट करके ये स्टोरी दी है सोच लो ये कितनी बार रिपीट हुई. Got it my point? Come to the next. Okay. So what title you will give it in? Bad company. Right? I want to tell you a thing, Gaurav. आपने कहा था कि स्टोरी है वो दूसरी मॉडिफिकेशन स्टोरी आप लेकर आए थे इसमें भी ऐसी स्टोरी है यहाँ पर ये है कि वो फ्रेंड की संगत में जब पड़ जाता है तो उसकी कंपनी जो है खराब रहती है उनके लिए ठीक है तो वो ये सोचते हैं कि वो कंपनी जो है हमें छोड़ देनी चाहिए करनी चाहिए उसी के जैसे उसके फादर उसको एग्जाम्पल देते हैं यहाँ पर और पहले ये था कि डायरेक्ट एक फादर है वो एग्जाम्पल देते हैं बच्चे को कि मैं तुम्हें एक सीख देता हूँ आज एक मॉरल तुम्हें बूस्ट करता हूँ तुम्हारा एनकरेज करता हूँ तो डायरेक्ट उसके एप्पल वाले ये चीज आती है यहाँ पर ही मॉडिफाइड स्टोरी है कि वो फ्रेंड्स में एक बैड गुड बॉय जो है बैड कंपनी में पड़ जाता है पहले उसको लाइव एग्जाम्पल दिया फिर बाद में उसको रॉटन एप्पल्स वाला दिया फिर दिया फादर ने और पहले ऑलरेडी वो मेंशन होता है कि मतलब वो फ्रेंड की बैड संगत में है ठीक है बैड कंपनी में आ गया So you know very well what is the moral of the story? Bad company moral? Yes, better alone than in a bad company. Got it? Okay.
As we have already discussed in the yesterday live class, a fox and a crane. Once upon a time, there were a fox and a crane. They were fast friends. One day, the fox invited the crane to dine with him. The crane went to the fox. He welcomed the crane. I have not given you the outline of it. Do not bother it. He put flat dish containing soup. The fox lapped up the soup. The crane had a pointed beak, so it could not drink the soup. The crane went back hungry. It thought of a plan. The next day, the crane invited the fox to dine. The fox went there. It put boiled rice in a jar. Its snack was narrow. The crane ate rice and the fox remained hungry. Means tit for tat. उसने पहले इनवाइट किया क्रेन को इनवाइट किया तो उसने क्या करा खुद से पहले सूप लिया जो क्रेन ड्रिंक नहीं कर सकता ठीक है फिर क्रेन ने इनवाइट किया उसको डिनर पे और उसने राइस रख दिए जो कि वो नहीं कर पी सकता वो नहीं खा सकता इट मीन्स ठीक है मतलब टिट फॉर टैट जैसे को तैसा उसने वैसा ही करके दिखा दिया स्टोरी ओके कम टू द नेक्स्ट A hungry fox sees a crow. Fox wants bread. Fox tells. So totally, a fox and the grapes की वो story है. Once there was a hungry fox. She was in search of food. She could not get food anywhere. At last, she saw a vine in a farmer's field. There was no one. She went there. She saw many ripe bunches of grapes there. Her mouth watered, but the grapes were very high. She jumped at them, but she could not get them. She jumped again and again, but all in vain. वो कहीं जो try कर रही है ना वो दिख ही नहीं रहा कहीं all in vain सब waste गया. She looked at them with greedy eyes, but she was helpless. She said that the grapes were sour. मतलब कि उसने मान लिया कि अगर वो मेरे हाथ में आए तो अंगूर खट्टे हैं. So she should not try to get them. She went away. फिर उसने try नहीं किया और वो चली गई. क्या पता और try करती हो और आ जाते. तो मतलब जो चीज हमारे पास में नहीं होती हम उसको क्या करते थे ग्रेप्स आउट ऑफ रीच आर सेड टू बी सार जो चीज आप पास नॉट एग्जैक्टली ग्रेप्स यहाँ एग्जांपल दिया है ग्रेप्स का बट जो चीज हमारे हाथ नहीं आती है जिस चीज तक हम पहुंच नहीं पाते तो हम सोचते वो चीज ही खराब थी हम ये सोच लेते हैं लेकिन हम कभी नहीं देखते कि हमारा ट्रायल जो था वो सही नहीं हम एक अच्छे बिगिनर नहीं थे शायद ठीक है डू नॉट फॉरगेट इट यू हैव टू बी अ गुड बिगिनर और अ सक्सेसफुल बिगिनर और मोस्ट रिपीटेटिव और मोस्ट easiest story a rabbit and a tortoise what is the moral of this story arushi rabbit and a tortoise no need to remember yes slow and steady wins the race just revise this story once a rabbit and a tortoise were fast friends the rabbit laughed at the tortoise because the tortoise was very slow. One day, tortoise asked the rabbit to run a race. The rabbit agreed. They ran the race on a certain day. The rabbit was very fast, but the tortoise was very slow. Very soon, the rabbit crossed halfway and sat down under a tree to take rest. He fell asleep. The tortoise continued to walk slowly and reached at the final destination. The rabbit lost the race, but the tortoise won the race. Why is it so? उसको थोड़ा सा प्राउड हो गया इन अ नेगेटिव मैनर कि मैं तो बहुत भाग रहा हूँ और टॉर्टोइस तो जो है वो धीरे धीरे आएगा कब तक आएगा पता नहीं तो व्हाई डोंट आई टेक अ नैप तो इसलिए उसने एक स्लीप ले ली नैप ले ली और एक झपकी में ही वो आगे चला गया स्लो बट स्टेडी विंस द रेस धीरे ही सही बट रेगुलर कंटिन्यू करो ना किसी चीज को तो आप जीत सकते फैल असलीप मतलब उसको फीलिंग हो रही थी स्लीपिंग वाली तो वो सोने पहुंचे मतलब सोच लिया Come to the next, the fill in the blanks with appropriate forms of the verb given in the bracket. He usually dash up early in the morning. Simple present है, obviously S और ES use करना होता है. So we are going to use here gets. Neetu dash a song now. अभी present की बात हो रही है. Sing to Neetu singular है. When subject is singular, verb is plural तो Neetu is singing. Why is it so? क्योंकि वो अभी now कर रही है. Neetu sings a song होता, but I have added here now. ठीक है from my side. ठीक है that's why ये आंसर हो गया नीतू is singing a song now. रोहित डैश उर्दू फॉर 5 years मतलब कब से चला आ रहा है
लर्न, तो वो तब से कर रहा है, अभी भी कर रहा है, तो रोहित हैज बीन लर्निंग। दे डैश टेस्ट व्हेन द पोस्टमैन रैंग द बेल। अब यहाँ पे दूसरा वर्ब जब आ रहा है देन यू हैव टू रीड इट। हैज बीन क्यों आया, वो तब से करा आ रहा है, तो मतलब अब तो कुछ लर्न कर चुका है ना वो, तो वो यहाँ देगा ऑलरेडी सिंस आपको। बट यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन है कि लगभग 5 साल से वो अभी भी लर्न कर रहा है, 5 साल से कुछ तो कर चुका है, स्टिल आई एम यूजिंग है, तो प्रेजेंट में चल। ठीक है, कल भी बताया था चुकना, तो परफेक्ट का साइन है, लेकिन अगर चुका था तो वो पास्ट परफेक्ट है, अगर वो अभी भी कर रहा है, कर चुका होगा, तो विल हैव आए। ठीक है, कल आप इस टाइम तक एग्जाम दे चुके होंगे, यू विल हैव फेस द एग्जाम टुमारो बाय दिस टाइम। दे डैश टेस्ट व्हेन द पोस्टमैन रैंग द बेल। रैंग होता है, रैंग यहाँ पे आपको फॉर्म मिल गई। ये चीज ध्यान में रखने के लिए जिन लोगों को टेंसेस थोड़े वीक हैं वो फोकस कर लें कि यहाँ पर जब पास्ट आ रहा है तो यहाँ पर या तो परफेक्ट आएगा एज आई हैव टोल्ड यू, या फिर अगर उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके देख लें पास्ट कॉन्टिन्यूअसली आएगा। ठीक है, बट ये तय है कि वो पास्ट नहीं आएगा, या तो कॉन्टिन्यूअस या परफेक्ट। तो when the postman rang the bell, take है, they were taking test। ठीक है, जब वो टेस्ट दे रहे होंगे, अब टेस्ट तो कुछ मिनटों का नहीं है ना, कुछ टाइम का ड्यूरेशन का है वो। The students dashed the class before the teacher arrived। The students had left the class। ठीक है, वो छोड़ चुके थे क्लास जब टीचर पहुंचा। The emperor dashed all the treaties and attacked his enemy, broke। वाटर डैश ऑन हीटिंग, ये तो सिंपल प्रेजेंट ही है, वाटर एवापोरेट। सीता डैश येट नॉट कम, सीता हैज नॉट कम। मदर डैश फूड बिफोर वी रीच्ड होम, मदर हैड कुक्ड। गॉट इट। आई डैश दिस बुक फॉर लास्ट 4 years। आई हैव बीन राइटिंग, अभी भी खत्म नहीं हुई है, पिछले 4 सालों से मैं ये बुक लिख रही हूँ या लिख रहा हूँ। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट। अच्छा, ये आपकी रिपीटेड ही है, तो फोकस ऑन fill in the blanks with a verb in agreement with its subject। neither of the girls। अब यहाँ पे गर्ल्स तो आपको दिख रहा होगा, बट कोई भी लड़की नहीं की हिंदी है, तो वो हिंदी सिंगुलर हो रही है ना, दैट्स व्हाई वी हैव यूज हियर हैज। ठीक है, कोई भी लड़की टिफिन लेकर नहीं आई। ठीक है, नीदर सीता नॉर हर सिस्टर्स डैश प्लेइंग। अब यहाँ पर ना सीता ना उसकी कोई फ्रेंड्स आए हैं, उसमें प्लूरल आए। गॉट इट, के सिस्टर्स को देखते हैं। ईदर यू और आई, एम यू हैव टू यूज सेकेंड बाय वॉचिंग द सेकेंड सब्जेक्ट। द पोएट एंड राइटर इज दैट। अब आपको लगेगा एंड लगा है, आर क्यों नहीं आया, राइट क्यों नहीं आया। पोएट कवि लिखने वाला, कविता लिखने वाला कवि, राइटर भी लिखने वाला, तो ऑक्यूपेशन एक ही है, क्या पता वो इंसान एक ही हो। ठीक है, इसलिए द पोएट एंड राइटर इज दैट, दैट्स व्हाई वी आर नॉट यूजिंग हियर आर। 100 miles इज अ ग्रेट डिस्टेंस। अब बहुत से बच्चे सोचेंगे वहां पे माइल्स हैं, फिर आर क्यों नहीं आया, बट 10 वो सॉरी 100 miles है, 100 मील ही तो कहोगे, 100 मील चल के आए हैं, 100 मील दूर से आए हैं। ठीक है, मीलों कोई कहोगे। ठीक है, तो 100 miles इज। कैटल जो है वो ऐसा ग्रुप है जो प्लूरल शो करता है, कैटल में कभी कैटल्स नहीं आएगा, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग हियर आर। कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब कोई एक जानवर तो नहीं आएगा ना ग्रेज करने, मोर देन वन ही होंगे। हरी बिसाइड्स हिज सिस्टर्स गोज। अब यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ, यहाँ पर रूल है इधर और नीदर आता है, यू हैव टू वॉच द सेकेंड सब्जेक्ट, और जब कुछ और आता है इन एज वेल एज और इन एडिशन टू बिसाइड्स, में आपको वॉच करने होते हैं पहला वाला सब्जेक्ट जो फर्स्ट सब्जेक्ट होता है। दैट्स व्हाई व्हेन सब्जेक्ट इज सिंगुलर वर्ब इज प्लूरल। एवरी मैन वुमेन एंड चाइल्ड was present in the festival, still man woman and child
थ्री तो ऐसे ही हो गए। अब पूरी कम्युनिटी बता रहा है तो मतलब प्लूरल होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर लगाए हैं एवरी, हर एक को, दैट्स वाई यहाँ पर सिंगुलर यूज हुआ। ठीक है, स्लाइटली सिली सिली चीजें जो आपके मार्क्स खो देते हैं, बट डू नॉट लूज। द टॉलेस्ट ऑफ द थ्री बॉयज, उन तीन बच्चों में जो टॉलेस्ट है वो, तो वो सिंगुलर हुआ, यहाँ प्लूरल है। ठीक है, वर्ब इज प्लूरल। 10,000 रुपीज, 10,000 रुपए है तो एक ही अमाउंट ना, उसमें नोट बहुत सारे हैं, लेकिन बात तो हम 10,000 रुपए की कर रहे हैं। 10,000 रुपीज इज अ गुड हेल्प फॉर अ पुअर मैन। इज देयर एनी प्रॉब्लम इन इट? किसी को भी कोई इशू? ओके, थैंक यू। द नेक्स्ट इज read the following passage given below and answer the questions that follow. हाँ बिल्कुल। Now who is telling me from where this passage has been taken? This is scene passage. A sermon at Banaras. Yes, she considered the fate of men. Do not shout that their lives flicker up and are extinguished again. And she thought to herself, how selfish am I in my grief. Death is common to all, yet in this valley of desolation, there is a path that leads him to immortality who has surrendered all selfishness. The Buddha said, the life of mortals in this world is troubled and brief and combined with pain. Yes, Sarman at Banaras. Good. For there is not any means by which those that have been born can avoid dying. After reaching old age, there is death of such a nature are living beings as ripe fruits are early in danger of falling. So mortals when born are always in danger of death. As all earthen vessels made by the potter and in being broken, so is the life of mortals, both young and adult. Both those who are fools and those who are wise all fall into the power of death, all are subject to death. Who is common to all according to Gautami? अभी Gautami कौन थी आपको क्या पता, लेकिन examiner is using here she, तो मतलब की तो कोई लड़की, दैट्स वाई इसको सीन पैसेज कहते हैं, बट ये एज इट एज क्वेश्चन नहीं पूछता। ठीक है, उसने एज इट एज क्वेश्चन पूछने के बाद भी आपको कंफ्यूज कर दिया। हु इज गौतमी? दैट इज किसा गौतमी। एंड हु वाज शी? जिसको सरमन दिया था, जिसको समझाया था कि दैट इज कॉमन टू ऑल। क्या सुन रहे थे ये उपदेश? यस, बिकॉज हर सन वाज डाइड एंड ही शी डज नॉट बिलीव कि मेरा बेटा कैसे मर सकता है, मेरे को तो उसको जिंदा करना है। आई डू नॉट बिलीव ऑन इट। तो उसको बताते हैं, यू हैव टू ब्रॉट अ मस्टर्ड सीड। यस, व्हाट इज कॉमन टू ऑल अकॉर्डिंग टू गौतमी? डेथ। और बुद्धा ने उनको इस तरीके से समझाया था, उनको ये नहीं कहा था, बाकी लोग आके कहने लगे ये तो पागल हो गई क्या, ये तो बावली हो गई, हाउ स्टूपिड शी इज नॉट बिलीविंग दैट हर सन इज died. Now he is not able to move. लेकिन still she is not believing, तो सब लोग आके उसको इस तरीके से बोल रहे थे, but Buddha came to her and asked about it कि what's the matter. So she said, my son is not able to speak, my son is not able to move. What can I do for him? तो उसने ये बोला, गौतम ने, just go and bring a handful mustard seeds from any kind of house, from anywhere, from any society. ठीक है, कोई भी अगर तुम्हें मुट्ठी भर हैंडफुल मस्टर्ड सीड दे दे, सरसों के दाने दे दे, तो मान जाना कि तुम्हारा बेटा जिंदा हो गया। वो गई, जाने लगी, जैसे ही गौतम बुद्ध स्टॉप्ड हिम कि वेट, एक चीज और बोलूंगी। एक चीज ये बोला उसने कि जाओगी तो सही, और कोई भी दे देगा, सबके घरों में होगी, नो इश्यू। ठीक है, लेकिन लाना उस घर से जहां पर कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई, where no one has died. तो बोली ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ले आऊंगी। हाँ, मस्टर्ड सीड प्योरिटी का साइन है, सरसों के दाने। तो उसने बोला ठीक है, वो गई, एंड इट इज कॉमन फॉर एवरीवन, अब सबके घरों में होता है, वो अवेलेबल होता है, सब दे भी देंगे।
लेकिन उसने कंडीशन डाल दी, वेयर देयर नो वन हैज डाइड, ठीक है। तो वो गई, सब घरों में से मांग के लाई और शाम तक खाली हाथ लौटी। बुद्धा वॉज वेटेड फॉर हर, बुद्धा सेड, बुद्धा आस्क्ड अबाउट इट, लाओ मस्टर्ड सीड्स कहाँ है, मैं अभी तुम्हारे बेटे को जिंदा करता हूँ, वो अभी जीवित हो जाएगा, ही विल बी अलाइव। तो उसने बोला नहीं, ऐसा कोई बच्चा ही नहीं घर जहाँ पे किसी की मौत नहीं हुई। तब उसको समझ में आया, बोलो नाउ यू गॉट टू नो व्हाट आई वांट टू, व्हाट एवरीवन वांट टू से यू। मेरी मौत जो है निश्चित है, कब आनी है वो तय नहीं है, लेकिन आनी है ये तय है। इट इज कॉमन फॉर एवरीवन, फॉर ऑल, एंड यू हैव टू बिलीव इन इट। अब वो बेटा गया जो गया, वो तो वापस नहीं आया, ठीक है। ओके, हु मेक्स आर्दन वेसल्स, मिट्टी के बर्तन कौन बनाता था? डेफिनेटली पॉटर बनाएगा। What did Kisa Gautami realize about immortality? No one can achieve immortality. Only the rich can become immortal. या one who gives us selfishness finds the path to immortality. या Buddha grants immortality to his followers. Definitely वो selfishness find out करके उसको त्याग देना और ऐसे राह पे चलना जो immortal है। मॉर्टल होता है बहुत इंपॉर्टेंट, इमॉर्टल जो इम्पोर्टेंट नहीं है। वैसे ही यहाँ पर डेथ सीन में मॉर्टल मतलब पवित्र, और इमॉर्टल जो अपवित्र हो जाता है, लेकिन हमें उस चीज को नहीं मानना, मतलब सर्टेन और अनसर्टेन बहुत सारे मीनिंग्स निकलते हैं, ठीक है। हमारी जो इमॉर्टल सोल होती है, प्योर सोल होती है, ठीक है, यहाँ पर उसका मतलब हाँ, तो मैंने बोला, मैंने सर्टेन अनसर्टेन ये सारी चीजें बोली, कॉमन ऑर्डिनरी, और मैंने बोला डेथ इज सर्टेन ना, तो यहाँ पे इसका मीनिंग सर्टेन है, दैट इज अमर, यहाँ पर, ठीक है। तो वो अमर नहीं है, इमॉर्टल है। हमारी मृत्यु अमर थोड़ी है, हमें तो जाना है ना, लेकिन वो तय है, वो सर्टेन निश्चित है कि हमें जाना है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू बुद्धा, व्हाट इज द नेचर ऑफ मॉर्टल लाइफ? मॉर्टल लाइफ एक जिंदगी का क्या वो है, नेचर क्या है? आप अगर जिंदा हो, आपने कोई गलती ही नहीं करी, तो मतलब आप इंसान नहीं हो, और आपने गलती करी, इट मीन्स यू आर अ ह्यूमन बीइंग, डेफिनेटली, ठीक है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? ब्रीफ एंड फुल ऑफ सफरिंग, ठीक है, पूरा दुख भरा, सब कुछ इसमें इंक्लूड है, फुल ऑफ सफरिंग से है। व्हाट इज द डेंजर टू अ राइप फ्रूट? अ राइप फ्रूट हैज अ डेंजर ऑफ फॉलिंग अर्ली। व्हाट इज द पावर ऑफ डेथ? The young and adult fools and the wise all fall into the power of death. The young और adult fools and wise, ठीक है, ये सारे डेथ के पावर, मतलब कोई यंग है तो वो नहीं मरेगा, कोई रिच है तो वो नहीं मरेगा, ऐसा नहीं, all will die, ठीक है। Got it? The next is answer any three of the following four questions in about 20 to 30 words each. Why did Lancho say the raindrops were like new coins? A letter to God say it has been taken. Lancho said the raindrops were like new coins because those were round like coins. सबसे पहली बात, वो एकदम coins की तरह round round थे, इसलिए उनको इस तरीके से बोला गया. A good rainfall ensured a good crop and the good crop would bring money and prosperity. उसका means ये भी था, उसका means snowfall जो आपका hailstone है वो भी था, and you have to write all the answer, all the points in it. Got it? Why were two national anthems sung from the chapter 2 Nelson Mandela? The two national anthems were sung because they showed two visions, both of the whites and the blacks. The white wanted to show respect to their national anthem and the blacks to their. Both के वही होते हैं, दोनों अच्छे अच्छे देना चाहते हैं. Yeah, of course, it is too easy. You will face in your exam also. White people जो हैं वो आपको रिस्पेक्ट शो करते हैं, डेफिनेटली जो ब्लैक पीपल हैं उनके भी रिस्पेक्ट शो होती है, बट वो उनकी करते हैं, ठीक है। जैसे हम हमारे नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करते हैं, वैसे वो करते हैं, लेकिन जब वो गाते हैं तो हमें उनका समझ नहीं आता, वी विल नॉट गिव रिस्पेक्ट, लेकिन वी हैव टू शो इट, ठीक है। द नेक्स्ट इज हाउ डिड द फैमिली प्रेज द यंग सीगल आफ्टर ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट? आफ्टर ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट द फैमिली स्क्रीम्ड अराउंड हिम, के आसपास उड़ उड़ के चिल्ला रहे थे, उसको बहुत एक्साइटेड कर रहे थे, praised him and offered him scraps of dog fish. How does Annie support her habit of talking?
She says that her mother was a talkative lady, so it is an inherited trait. Talking is a student's trait. She would do her best to control it. ठीक है, उसने ये बोला टॉकिंग अगर बच्चे नहीं करेंगे तो क्या होगा, उनका तो जन्म से अधिकार है, इनहेरिटेड ट्रेड है. ठीक है, और फिर आगे की लाइन उसने यही बोली थी, आई गॉट दिस हैबिट फ्रॉम माई मदर. तो व्हाट कैन आई डू इन दैट? इट इज माई हैबिट. She sat to her teacher who gave him so-called essay writing. If you remember, chatterbox. Why should I remind you? Why don't you remind by yourself? Answer any one of the following two questions in about 60 words. How is River Kaveri a lifeline for wildlife in Coorg? River Kaveri is the lifeline for wildlife in Coorg as it provides water to the region's dense forest, sustaining diverse flora and fauna. Mahasi fish thrive in its waters, while elephants, birds, and other animals depend on it for survival. The river nourishes the lush greenery, making Coorg a rich habitat for wildlife. Why was the young seagull alone on his ledge? The young seagull, definitely बहुत most repeated question है ये. Definitely there is a possibility you will face it in your board exam also. There is no doubt. The young seagull was alone on his ledge as his two brothers and sister had already flown away the day before it. He had been afraid to fly with them. When he tried to flap his wings and take the flight, he was seized by a terrible fear. उसके दिमाग में एक fear था. And drew back. His parents scolded him for his cowardice and left him alone. Got it? How does a baker look in appearance? A baker has a peculiar dress known as kabai. This kabai was worn in those old days. It was a single piece long frock reaching down to the knees. Some of them also put on a shirt and trousers which were shorter than full length ones and longer than half pants. Baker has a bamboo in his hand and makes a jingling sound. वो लकड़ी की वो होती है ना, bamboo stick होती है और वो jingle करते हुए जाते हैं, उसको बजाते हुए जाते हैं. वो just like jingling sound वो करते हैं tree. Draw a character sketch of the postmaster. The postmaster is a fat, amiable fellow, मतलब friendly fellow. और वो इस तरीके से बिहेव कर रहा था, इतना ट्रीट कर रहा था कि उसने बोला था ना कि ठीक है मैं उसकी हेल्प करते हैं, तो चलो मैं रेडी हूँ, बाकी लोगों को भी उसने रेडी किया था. दैट्स वाई इट इज ही इज एमिएबल फेलो, मतलब बहुत अच्छा कंपेनियन था वो, friendly. When the postman brings to him the letter that Lanchu had addressed to God, he breaks out laughing, but soon he becomes serious. He is greatly impressed by Lancho's faith in God. He resolves to keep it intact. He decides to answer Lancho's letter. The postmaster asks his employees and friends to donate for an act of charity. He himself gives a part of his salary. Got it? हाँ रिपीट हुआ है, 2 times आया लेकिन. बट हियर आई एम टेकिंग ऑल द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है, जो आए हुए हैं वो यहाँ लिए गए. ठीक है. Why do the wise not grieve for the dead? As we all know, death is a compulsory part of life. The wise do not grieve for the dead because they know the terms of the world. हम conditions जानते हैं संसार की, world की. A father can't save his son nor kills one their relatives. वो किसी को भी नहीं बचा सकता. यस yes, उसमें से आपकी ऑप्शनल में क्वेश्चन आते हैं, तो देयर इज नो नीड टू वरी. हमने बाकी के रेस्ट ऑफ द सारे चैप्टर्स बहुत अच्छे से पढ़ रखे हैं, तो यू विल फेस डेफिनेटली डू नॉट गो टू बी टेरिबल बिकॉज आपने बाकी के चैप्टर्स बहुत अच्छे से कर रखे हैं, तो आपको एज सच प्रॉब्लम नहीं होगी. उसमें से ऑप्शनल क्वेश्चन आता है, तो नो नीड टू डू दैट. The relatives look on and lament deeply, but the dead are carried off one by one for cremation. So the wise know that this world is afflicted with death and decay. Got it my point? Answer any one of the following two questions in about 61. What do you know about Squeezer? Who was Squeezer? As I have asked you. Squeezer is a dog of the Chubuco. It is a thoroughbred animal. It is a young dog on points and pedigree. It is better than anything. It is the son of harness and chisels. It was bought for 85 rubles.
इट इज अ करेंसी 85 रूबल, ठीक है, वो इतने का लेकर आए थे वो. Chubukov and Natalia consider Squeezer superior to Lomov's dog. And what was the name of Lomov's dog? Yes. However, Lomov argues that Squeezer is overshot and not a good hunter. What is the reason behind the quarreling of Natalia and Lomov? Natalia and Lomov quarrel over two main reasons. Lomov claims that the oxen meadows belong to his family, while Natalia claims that her family has been using the land for their cattle for as long. They also argue over which of their dogs, Squeezer and Guess, is superior. It shows how trivial matters overshadow Lumov's actual purpose proposing marriage to Natalia. उसका कोई और मोटिव था ही नहीं, वो तो नटालिया को प्रपोज करने आया था, ठीक है, और कहीं कोई मोटिव नहीं था, लेकिन उनके दो ही रीजन पे फाइट होती थी, डॉग के बदले और एक ऑक्सन मेडोज, दैट इज लैंड. हाँ, बिहाइंड द क्वारलिंग मतलब उनके क्या रीजन थे, तो उनके दो ही रीजन थे. एक तो ऑक्सन मेडोज के बीच साथ में लड़ाई होती थी जो लैंड प्रॉपर्टी का नाम है, एंड सेकेंड इज डॉग्स, मेरा डॉग सुपीरियर है रादर देन योर. हाउ डज द प्ले द प्रपोजल कंक्लूड? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, जो आपके ऑप्शन आते हैं उन ऑप्शन में सेकेंड वाला ये होता है. Yes, of course, they argue both of the topics. The play, the proposal concludes at a happy note. The quarreling young persons, Lomo and Natalia, catch each other's hands and kiss too. They fulfill the customs of marriage. Chubukov also feels happy and relieved after putting Lomo's hand into his daughter's, but they still keep arguing over whose dog is better. Chubukov suggests that all of them should have champagne to celebrate. Okay? Discuss about the aptness of the title, the proposal. Aptness means justified. कि the proposal basically अच्छा टॉपिक है और वो सूट करता हुआ टॉपिक है क्या, सूटेबल है क्या उनके लिए. The title, the proposal, is apt as the play revolves around Lumov's intention to propose to Natalia. However, instead of a smooth proposal, petty arguments over land and dogs dominate their interactions, which turns the event into a कॉमिक फियास्को. मतलब कि है ना, वो जब प्रपोज करने गया था और उनके दोनों क्वारलिंग जब हुई तो एक कॉमिक टास्क बन गया और सबको बहुत मजा आया इस कंक्लूजन में, जब वो देख रहे थे, सुन रहे थे, पढ़ रहे थे. डिस्पाइट द कॉन्फ्लिक्ट, marriage is ultimately agreed upon, making the title ironic yet appropriate. It highlights the play's humor and central theme. Of course, वो highlight करती है, उस theme पे सूट होता है, justify करता है उस title को. Now come to the last question. Read any one of the following extract and answer the question that follow. Has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had ruined. Okay. From which poem this extract has been taken? From which poem? Yes. What is the central theme of this extract? Okay. Nature's ability to uplift his mood. What was the impact of the act of nature on the poet? The act of nature changed the mood of the poet. His sad thoughts were removed and the poet was made vivacious again by it. What was the condition of the poet? Why was it so? Initially, the poet was sad and depressed. It was so because he was feeling weighed down by the sorrows of life. जो दुख भरी कहानी थी ना उसकी जिंदगी की, उससे बहुत ज्यादा वो प्रेशर फील कर रहा था. Some say the world will end in fire. Some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. From where it has been taken? Fire and ice. Yes. What was fire symbolized in the extract? पता है? Done. Okay, good. What would be the causes of the end of the world according to the people? According to some people, fire will be the cause of destruction of the world. Others say that ice will be the cause of destruction of the world. Why does the poet think the reasons to be fire? The poet thinks that the world will be destroyed by fire
because desire is the root cause of evils that can lead the world to its destruction. इसका मतलब ये है जो इच्छाएं हैं इंसान की कभी खत्म नहीं होती और वो उसको डिस्ट्रॉय करने पे तुली रहती है. आपकी एक नीड सेटिस्फाई हुई, दूसरी नीड आ गई, फिर तीसरी आ गई और उसको फुलफिल करने के लिए आप डूबते जाओगे, आप स्पॉइल हो गए और कुछ नहीं. Answer any two of the following three questions. Write the central idea of the poem A Tiger in the Zoo. The poet tries to depict the mental condition of caged tiger. He conveys an important message that the wild animals should be left in their natural habitat. Okay? How did the dragon face the pirate? From the tale of the custard the dragon. The pirate had pistols in both hands and cutlass in his teeth. The dragon jumped upon him like an engine. He hit him with his tails and gobbled him up. Next is, how are the birds, insects, and the sun affected by the absence of the trees? Birds have no place to sit, insects cannot find any place to hide, and there is no shadow in the forest by sunlight. ये होगा अगर trees नहीं रहेंगे तो. Hope this is clear to you all. So all the very best for the exams. Thank you.